So thank you, gentlemen. Thank you so much for joining us here this afternoon. Uh, Dr. Sanjay Kolte, I'd like to begin with you first. Um, if you could elaborate on the fact that, how is this concept of smart city evolving in India, and what are the key pillars on which, this smart city master plan should prioritize? Yes. Smart City mission started in 2015, and we are into eighth year now. 100 cities have been taken up in the country under the Smart City mission. The vision of Smart City mission was to build core infrastructure in these 100 cities by leveraging technology, and to make these cities into engines of growth by creating atmosphere which will promote the quality of life, improve the quality of life, and improve the livability of the cities. Also, the environment for industrial growth, uh, innovation, and startups was aimed to be improved under this. And overall, uh, to make the cities resilient, inclusive, and sustainable. So, under these vision objectives, the mission was launched, and the cities have been working in this direction by way of four pillars. I would say mainly the sustainable infrastructure. That is one thing, which through various projects, sustainable infrastructure is being attempted in all these cities. Smarter technologies are being incorporated in most of these initiatives. Uh, Environment supportive for the industries, innovation, and startups, that is being promoted by various supportive activities. And efficient governance and citizen engagement, that is the fourth pillar under which smart city mission and the cities have been working. The ultimate objective was to create lighthouse projects or replicable models, Right. so that the rest of the cities, besides the area based development area pockets, and other cities which are not in the smart city mission, they should replicate, or they should inculcate this lighthouse model. That was the aim, and most of the cities are going working in this direction. Right, right. Uh, Mr. Vikramaditya Singh, if you could probably, share your thoughts on the same question and also probably elaborate a bit about your experience. Thank you. At the outset, I would like to thank Elets and Ranveer Prasad sir for giving me this opportunity to be a part of this conference. I think the purpose of the smart cities mission has already been laid out. I think initially when it started out, although as our honorable chief secretary sir said in the morning that this was perhaps one of the first few missions which was started on the basis of a competition. So every city had to submit an SCP, a proposal, on the basis of which the 100 smart cities were chosen. But initially, I think when you think about a smart city, you think about digitized services. You think about reducing human effort, to put it very plainly. But I think what we need to focus on and what the smart cities mission has come to be is a much broader holistic approach of developing a particular area which they call as the area based development approach. Right. I was fortunate to be CEO Varanasi smart city for about 10-11 months, and I worked in that area. I think the more holistic you make your SCP or the plan, the better or the more smart a city will be. For example, we used to see other smart cities as well, and there were a few smart cities I remember who had completely focused on, say, one area, say roads, right, or completely focused on parks or schools or education. I remember there was one smart city in South India which had focused a lot on education, making smart classes. uh, the experience that I carry from Varanasi, it was first of all the SCP that was made was uh, to retrofit the old city. So the ABD area that was taken was the old city, which is a bigger challenge because it was already very cramped. Uh, but the kind of projects that were taken included a holistic approach, which is what I'm trying to say when we talk about smart cities. What's required is that before digitizing services, before coming to that stage, what you need to realize is do a data based analysis on population growth trends over the next 10-15 years, and on that basis form your policies, form your plans. Existing infrastructure needs to be upgraded, and then that infrastructure needs to be onboarded. For example, if you don't have
transport services, or if you don't have in that area adequate traffic management, then an ITMS system can help you only to a certain extent, right? Similarly, if you talk about SCADA systems for water sewerage systems, but you don't have those lines, that infrastructure in place, that upgradation of infrastructure in place to monitor that through the SCADA system, then that SCADA system is also not of much use. So, for example, that Chief Secretary Sir said in the morning, ducts were created across. So, one of the projects that we took up in Varanasi was redevelopment of 6 wards that were abutting the ghats, and that redevelopment involved complete extraction of the centuries old patthar and the flooring, creating ducts for all utilities, shifting all utilities underground, and monetizing that, and then having new flooring and facade building. So, what I'm trying to say is that today we need to look at 3 things. The first is upgradation of existing infrastructure and readiness of that infrastructure to adopt digitization, to adopt modernization. The second in any city is how do you integrate your planned and unplanned areas of the city and move them together. It shouldn't be that you focus only on one part and not on the other part. And then comes your services, which include, say, transport, water, sewerage, drainage, health, solid waste management, and then digitizing those to make services simpler for the people of the city. So this is my take on how the smart cities have evolved. Thank you. Right. You interestingly mentioned about area-based development approach. So, Sanjay sir, any thoughts that you have on this? Speaking in the context of Pune Smart City, Aund, Baner, and Balewadi, these were the three localities which were taken up under area-based development. And transport sector, the emphasis was laid on mobility to a great extent. And besides this, creation of pockets for citizen engagement or green pockets, that was another initiative by way of developing the amenity spaces into gardens and parks by way of theme-based development. So these two approaches were taken up mainly, largely by Smart City, and this was again supplemented with other related activities like road paintings, the signages on the roads, the street LED lights, and other facilities. Of course, water 24 by 7, that was another project at the Pan City level that was also contributing in the ABD area. So, by way of this infrastructure, again, that infrastructure was tried to be made as sustainable and as inclusive as possible. Inclusion of footpaths for the improving the pedestrian experience. Then incorporation of cycle tracks was done in this area. All the utilities, as you said, they were converted into underground to again increase the ease and or ease of transport for the citizens. By way of street LED lights, again saving on the energy side, almost 60% saving on the energy front by way of incorporation of LED technology was achieved in these areas. Again, the uh, methods for improving the movement of visually impaired citizens. So those tactile kind of tiles and other things which were incorporated into the footpaths and the road crossing. So these are some of the examples in which the area-based development progressed. Right. Yeah. So, y- अगर आप लोग लखनऊ का देखना चाहेंगे स्मार्ट सिटी का, तो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में जो हजरतगंज के आसपास ओल्ड सिटी है वहाँ इसको लिया गया है। अगर बड़ा इमामबाड़ा आप देखेंगे तो उसमें जितने भी डक्ट थे, जैसे विक्रम ने बताया कि हमने यूटिलिटी सारी शिफ्ट की है, तो अराउंड 12 किलोमीटर के करीब हमने रोड्स को रीडेवलप किया है। और उसमें आप देखेंगे कि सारी यूटिलिटीज़ हम अंदर ले गए हैं, लेकिन उसके अलग अलग चैलेंजेस है, क्योंकि ओल्ड सिटी में रेट्रोफिटिंग करने में प्रोजेक्ट में बहुत टाइम लग जाता है। हमारा इनिशियल प्लान था 1.5 साल का, वो तकरीबन 3 साल तक हम लोग उसको कंप्लीट कर पाए। लेकिन जब कंप्लीट हुआ, जितने फसाड थे सारे चेंज किए गए उसमें, स्ट्रीट लाइट से लेके इसके बाद हमने उसको हेरिटेज का भी देखा कि हेरिटेज में हम लोग कैसे उसमें वर्क कर सकते हैं। तो हेरिटेज का प्रोजेक्ट जो है केसर बाग से लेके हजरतगंज तक अभी भी चल रहा है उसमें। तो इस तरह से स्मार्ट सिटी ने जो एक सिटी के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स को इंटीग्रेट किया है, हमने स्टार्ट एरिया बेस से किया था, लेकिन उसको फिर पैन लखनऊ
कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं जिसमें हमारा इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, ITMS है। अभी हमने उसमें एक सेफ सिटी का भी कॉन्सेप्ट किया है जो आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। और इसके साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लिए हैं, जैसे विक्रम ने बताया कि सर्विसेज को बाद में हम लोग जैसे जब इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो जितना सीवर सिस्टम था इस एरिया बेस्ड सिस्टम में, हमने इसको लेके एक बड़े STP से जो हैदर कनाल में बन रहा है उसके साथ लिंक किया है, और छोटे छोटे STPs नालों पे लिए हैं। तो हर सेक्टर में काम करते हुए लखनऊ स्मार्ट सिटी ने सिटीजन्स की लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने की एक कोशिश की है, जो अभी कंटिन्यूस प्रोसेस है। दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ अमृत योजना या जो SBM स्वच्छ भारत के साथ जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इम्पैक्ट जो स्मार्ट सिटी का तब और बढ़ेगा। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक छोटा स्टार्ट किया गया था एक एरिया को लेके, और इससे जो लर्निंग हुई है उसको हम लोग जो डेटा इससे जनरेट हुआ है वो हमारे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एज ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी बहुत हेल्प करता है। Ujjwal, I'd like to come to you now and probably understand from you, about the frameworks and policies needed to make, cities future ready by unlocking the potential of emerging technologies that are, playing a crucial role now. First of all, thank you to Elets Management and Raghvir Prasad sir for organizing such a knowledge sharing event. You have very rightly said emerging technologies can help to unleash the potential of smart cities. Lot of emerging technologies are coming like big data, data science, data analytics, machine learning, artificial intelligence, IoT, Internet of Things. We'll go one by one. With the machine learning, we can see the consumer behavior, consumer pattern, traffic behavior, traffic pattern. We can analyze the problem, we can pinpoint the issues. If we talk about artificial intelligence, with artificial intelligence in Raipur, we have ICCC, Integrated Command and Control Center. So there we are doing intrusion detection, unattended baggage detection, overcrowding detection using AI tools, AI plugins. Apart from that, AI can be very helpful in pothole detections, some other issues which are manually reported. So all those things can be automated. Now we come to big data or data science. It's very important. Thanks to ICCC, we have lot of data, tons of data smart cities have. Every smart city have lot of data generated every day. It gets piled up. Municipal corporation also has lot of data. Other departments like health, education department, statistics department, you see, take the pollution board, they have lot of data. But all those data are lying in different data sets in different formats. There is no coherence. We cannot derive an insight based on all these data. So what is the need? We need to create a data analytics, data science tool so that all those data sets can be clubbed together and they can provide a meaningful insight, actionable input, so that policies can be framed, as Vikramaditya sir told, policies can be framed on databases. So data-driven policies, data-driven decisions are need of the hour. And until and unless we go for data-based policy making, we may tend to wrong, or we may not to analyze or pinpoint the exact problem root cause, and we may not able to solve. So we should use data science, big data in a big way in a smart cities, municipal corporations, so that proper project planning, proper governance can happen. Also, the same thing with IoT. You take the name of SCADA. We have 24 by water supply scheme. So we are integrating with SCADA and automatic billing metering system. So everywhere IoT is there, sensors are there. If a fault is detected, so we are able to know that at which particular latitude longitude that fault is there. So we need not to dig the hole and do the all the working manual thing. With SCADA and IoT, lot of things can be, lot of manpower, human resource plus safety plus money can be saved. Right. Thank you. So, while we do have, the potential of emerging technologies that need to be harnessed, there is also probably a need to, have skills accordingly, being developed, and not just, for citizens, but also, for city administrators. So, I'd like to probably open this question to all, if anybody would like to answer this, that, what skills do city administrators require to plan, govern, and manage digital transformation initiatives? So, would you? I think these things were taken care of at the time of formulation of the smart city mission plan, as Vikram was mentioning.
a lot of citizen engagement and discussion with all the stakeholders that took place in 2014 in most of the cities, and subsequent to that, that competition was held, and the cities were marked, they were and ranked, and accordingly those 100 cities were chosen from through this competition. So sufficient foresight for the requirements of the city. What are the strengths and weaknesses and requirements of the city? Those are to be uh, thought of, and administrator has to have the knowledge of the strengths of his cities and the future requirements, because smartness means future readiness. So future readiness in all aspects, right from the uh, required technology which will be required to meet the needs of the city, taking into consideration the future, the sustainability of the initiatives, because the initiatives you start today, if the mission ends, so those initiatives should not, that those activities should continue, and they should be adapted as a culture in the urban development or by the urban local body in future also. So that foresight about the plans, that was very important, and capability in the officials about the smarter technologies or the emerging technologies which were largely right from the beginning, they were incorporated right from setting up of the integrated command and control centers and other following initiatives. So preparedness for this modern technology again, so training and other capacity building in that direction. And thirdly, I would say citizen engagement. Citizen participation is very important at all stages, right from formulation of the plan, during the implementation phase of the projects, and after completion of the projects, utilization of the projects. So at all these three stages, citizen engagement and capacity building of the citizens also, taking them along, that is very important. Inderjit sir, if you could also, add bit about the building of digital literacy to co-create these smart and sustainable cities. इसमें 2-3 इनपुट्स मैं देना चाहूँगा। पहला जो है कि जैसे सिटीज़न एंगेजमेंट्स की बात की आपने, जब बिल्डिंग डिजिटल लिटरेसी के कहा, जब हम कोलैबोरेट कैसे कर सकते हैं, मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो सिनर्जेटिक अप्रोच, क्योंकि होता क्या है कि जब एज ए म्यूनिसिपल कमिश्नर हम लोग काम करते हैं तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। जैसे अगर लखनऊ की एग्जांपल लेंगे तो जितना भी आपका एक कंपोनेंट है जो सबसे बिल्डिंग वाला कंपोनेंट है वो एलडीए के पास है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास, हाउसिंग का आवास के पास है पूरे का पूरा, और हम एक फिटनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह रह जाते हैं, मतलब एज ए म्यूनिसिपल कमिश्नर। और जब इनमें हम कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं, रोड्स पीडब्ल्यूडी ले बीच में कर रहा है काम, और जो सीवर का काम है जलकल कर रहा है, तो अगर हम लोग इसमें कोऑर्डिनेट ना करें, वो स्किल सेट अगर मिसिंग है उस डेटा को एनालाइज करके, तो मुझे लगता है कि हमारी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो एक स्किल सेट ये रहता है। एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे पुलिस के साथ भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन है ट्रैफिक को लेके। आईटीएमएस हम स्मार्ट सिटी से मॉनिटर कर रहे हैं, सेफ सिटी की कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, तो सेफ सिटी पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। अब 1000 हमने कैमरा लगाए हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, बड़े हाई क्वालिटी के पीटीजेड हैं अलग अलग में। अब उससे डेटा हम लोग कर रहे हैं फेच, लेकिन जब हमने सिटीजन का इंगेजमेंट लिया, उसमें डिजिटल लिटरेसी ली, तो वो जो कैमरा 1000 हमने लगाए थे वो अब 14,000 तक हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं सेफ सिटी में। अभी जैसे बैंक, यहाँ पे बैंकर्स बैठे थे, एसबीआई से बात हो रही थी मेरी कि आप अपने सारे एटीएम के कैमरेज का असेस अगर हमें दे देंगे तो आपके सारे एटीएम्स, मेरे जो पुलिस पर्सनल सेफ सिटी में बैठे 24/7 उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जितने स्कूल कॉलेजेस पेट्रोल पंप है, तो हम लोग 14,000 तक कैमराज एक जगह इंटीग्रेट करते हुए पूरे सिटी को देख सकते हैं। जैसे उज्जवल सर ने कहा कि हम लोग एआई को अगर इनकॉपरेट कर लें, जैसे आपने मैम कहा कि डिजिटल लिटरेसी, जितने मेरे ड्राइवर्स हैं जैसे स्कूल बसेस में हैं या ऑटो ड्राइवर्स हैं, उनको अगर हम लोग ऑन बॉडी या कह लो कि कैमरा दे दें जो उसकी गाड़ी में लगा हुआ है, और वो गली गली घूम रहा है, और वहाँ से वो लगातार पिक्चर ले रहा है जो मेरे काम की है, कहाँ स्ट्रीट लाइट टूटी हुई है, कहाँ पे मेरा जो रिसीवर का ढक्कन खुले हुए हैं। तो इस तरह का जो डेटा अगर शाम तक मेरे पास आ जाए वार्ड वाइज, तो मेरे लिए एक्ट करना सिटीजन की हेल्प से एट चीपर कॉस्ट बहुत ईजी है। होता क्या है कि अभी जैसे हम लोग काम करते हैं तो मुझे या तो कोई पार्षद कॉर्पोरेटर कॉल कर रहा है कि यहाँ सीवर ढक्कन खुला हुआ है, जब मीडिया से आ रहा है, मीडिया से जब तक आता है कि तब तक हमारे खिलाफ इतने कमेंट लिखे जा चुके होते हैं, तो हम लोग उसी को देखते हैं फिर जाके रिएक्ट करते हैं। तो उसे सिंपल आता है कि अधिकारी मस्त है, काम मतलब जनता त्रस्त है, ऐसे ऐसे कमेंट, मतलब आप हैरान रह जाएंगे।
तो मेंटली आपको स्टेबलाइज करने के लिए अगर ये चीज़ें मेरे साथ डेटा से आ जाए, पहले ही आ जाए, तो और हम लोग प्रोएक्टिव अप्रोच में चलें, तो मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी का जो सिटीजन के साथ एंगेजमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अब जैसे इसमें ये सेफ सिटी का भी कॉन्सेप्ट में मैं और इलेबरेट करूंगा, और अगर इसमें भी हम एआई लगा दें तो उसमें भी कई ऐसे डेटा सेट निकल के आ सकते हैं जिसमें हम लोग बहुत जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई चेन स्नैचिंग की कहीं पे, और वो चेन स्नैचिंग का पिक्चर अगर फ्लैश कर दें सारा यहाँ से लेके आगरा एक्सप्रेसवे तक, तो हो सकता है कि हम लोग बहुत प्रोएक्टिवली उसको पकड़ लें। तो सिटीजन का इंगेजमेंट या जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स का इंगेजमेंट, जिसमें बिजनेस ग्रुप है, ये हमें बहुत हेल्प कर सकता है इस स्मार्ट सिटी को और स्मार्ट बनाने में, हमारे रिस्पॉन्स टाइम में। अब जितने जैसे एक और लास्ट एग्जांपल देके क्लोज करूंगा। अगर अर्बन फ्लडिंग देखनी है लखनऊ का, तो उसमें भी कई सारे एरियाज है जो हर साल फ्लड होते हैं। अब बारिश आती है तो सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन एज ए म्यूनिसिपल कमिश्नर हमें टेंशन हो जाती है कि अब जल भराव होगा तो एक अलग चैलेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे सारे पंप हाउस 47 पंप हाउस है गोमती के आसपास, जो शहर का पानी गोमती में डालते हैं तो शहर एकदम फ्लडेड नहीं लगता है। अगर वो 47 पंप मैं उसको टाइमिंगली अपने स्मार्ट सिटी में देख लेता हूँ कि चल पड़े कि नहीं चले, अगर वो 8 घंटे बाद चलेगा तो फ्लडिंग का टाइम और बढ़ जाएगा। तो ये सारे छोटे छोटे जो इंटरवेंशन है वो बहुत हेल्प करते हैं। इसी तरह जैसे अभी सर ने कहा, उज्जवल सर ने, यहाँ पे हमारे पास 3800 किलोमीटर के करीबन पाइपलाइन है, और जो पानी सप्लाई कर रही है 3000 किलोमीटर से ऊपर सीवर लाइन है। अगर ये सारे के सारे स्मार्ट स्काडा सिस्टम या इनसे हो जाए तो हमें एक्ट करना उसमें बहुत ईजी रहता है। थैंक यू। Thank you. Vikram sir. Actually, I was going to make a couple of points जो sir ने बोल दिए, but I want to add that to the preceding question, that we always used to say कि the difference between the Japanese and the Indians was originally that Japanese spend 90% of their time planning and 10% in implementation, and Indians used to be the other way around. But I think smart city is one such example because of the SCP, because of a lot of people. It is one such example where at least I think we've come down to 50% planning and 50% implementation. But I think अगर आप स्किल सेट की बात करें, जैसे आपने दैट वाज योर क्वेश्चन एंड सर हैज गिवन वेरी रेलेवेंट एग्जांपल्स, तो आई थिंक स्मार्ट सिटी गिव्स यू दैट फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज स्मार्ट सिटी इज दैट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स partial government but in the form of a company. Right. So it is actually addressing public mandate through a private sort of private organization. So it has a lot of flexibility. अगर हम दूसरे विभागों की बात करते हैं तो we find it difficult to engage specialists in their field. Right. But in smart city you can have an IT specialist, the best in the country. You can have a civil specialist, you can have a water resources specialist. So you can really develop that skill, that pool of skill within the smart city to accentuate the plan and better your own implementation. When we're talking about developing, I want to give one more example. I think अभी हम देख भी रहे हैं over the last 5-6 years that when you give stability of tenure to somebody, Right. आपको अब जैसे सर कैसे कर रहे हैं, I don't know. Lucknow is a very challenging place. I'm sure sir को 6 महीने लगे होंगे to understand. Right. Right. And then sir would have his projects and then he would implement those projects. So from planning to design to conceptualization to implementation and then accountability. Right. You have to equip people, you have to equip leaders, you have to form leaders and then hold them accountable. Regarding a slight change in skill, in capabilities जो आपने पूछा था, I think one more thing that we need to talk about is different forms of asset creation, right? I think asset creation जो है वो जो ट्रेडिशनल माइंडसेट था वो ये था कि सरकार ने पैसा लगा के देखो कितनी अच्छा ये बिल्डिंग बनाई या ये इतना किया, बट द आइडिया ऑफ स्मार्ट सिटी इज टू क्रिएट सेल्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स. Right. अगर इफ स्मार्ट सिटी मिशन में यू आर स्पेंडिंग से 1 crore on a park within municipal limits and you're making that park into a modern park with greens, with everything, with open gyms, with kids play area, with everything, you have to think about it in that term कि after spending that 1 crore, the municipal corporation, once it's handed over from the smart city to the municipal corporation, the municipal corporation doesn't keep investing in it. It has to generate revenue itself, right? So how will you do it? You will try and commercialize a side of it.
आप 2-3 दुकान खोल दोगे, 1-2 होर्डिंग की जगह दे दोगे, उसका पैसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाएगा. So I think what is most important is to see how you can create self-sustainable projects. That is also a mode of alternate financing. In alternate financing we talk about PPP projects. Right. I think although I'm not I just have 5 years of experience in the service, but whatever I've seen around me, understood, I was first in Varanasi, now I'm in Ghaziabad. I think PPP projects are successful. अब PPP project में कोई क्यों आएगा? A business partner or a private partner, why would he invest in a PPP project? We have to think about it that way. He would invest only if he sees some profit in it. Right. He is not public service, is not his mandate, and we Absolutely. should not expect that of him. Right. That is why PPP projects are so successful in highways. Why are they so successful? Because एक highway, एक कोई, जैसे I know because मैं गाजियाबाद में हूँ, that Eastern Peripheral Expressway that we have, that has been taken over by a Canadian firm. It has been monetized. They have paid upfront about, I think, 5,000 crores to 5,000 crores or 4,500 crores to NHAI, and they're spending 100 crores उसकी मरम्मत करना, potholes वो सब ठीक करना, and then they monetize it for the next 25 years. They'll come in that as a PPP partner only if they see handsome gains in it. Absolutely. Right? They will not come otherwise. So we should not, in those, we should be careful that we should implement PPP projects in such verticals or such places where it is beneficial for both. A public service is being performed, but it is beneficial for the private sector also. In those verticals and sectors where we are looking at subsidies, where we're looking at purely public function, a PPP partner as a mode of alternate finance may not be the most beneficial in the long run. So these are a few facets I think we can consider when we're talking about smart cities. Absolutely. Great. Thank you. Yes, Ujjwal. आई थिंक सारे जरूरी पॉइंट्स आ गए हैं. मैं समराइज कर देता हूँ, रिवीजन कर देता हूँ. सबसे इम्पोर्टेंट जो लखनऊ वाले साहब ने बताया, कोऑर्डिनेशन गैप. जल बोर्ड भी कुछ कर रहा है, स्मार्ट सिटी भी कुछ कर रहा है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी कर रहा है, 1-2 और संस्थाएं भी कर रही हैं. तो बहुत सारा चीज़ें डुप्लीकेसी हो रही है, इंटीग्रेटेड प्लानिंग नहीं है, कोहेरेंट प्लानिंग नहीं है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स हो रहा है. सो आइडिया इज दैट कि जो भी प्रोजेक्ट हो, एक सिटी काउंसिल हो जो अप्रूव करे कि स्मार्ट सिटी इस काम को कर रही है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पिच नहीं करेगा, या इंटीग्रेटेड वे में करना है तो स्मार्ट सिटी के अलावा इतने पोर्शन को मिलाकर कर दिया जाए, कन्वर्जेंस हो जाए प्रोजेक्ट्स का, फंड्स का. तो एक बेटर प्लानिंग अप्रोच के साथ होगा. नहीं तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रोड खोदी, स्मार्ट सिटी ने 2 महीने बाद वहां गड्ढा फिर खोद दिया पाइपलाइन डालने के लिए. 2 महीने पहले का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है स्मार्ट सिटी को पता नहीं, तो उन्होंने एक साथ उसको ज्वाइंट नहीं किया कि हम केबल भी डाल दें और पाइपलाइन भी डाल दें. तो कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. साइलोस वर्किंग छोड़नी पड़ेगी. एक इंटीग्रेटेड कोहेरेंट सिटी काउंसिल जैसा हो जिसमें डिसीजन लिया जाए, कोलेब्रेशन हो जाए. सेकंड पॉइंट है सिटीजन एंगेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. अभी वर्तमान में जो स्मार्ट सिटी का फ्रेमवर्क चल रहा है उसमें सार प्रोग्राम आया है, बहुत अच्छा है. महुआ का मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का इनिशिएटिव है. उसका सार का ये है कि स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया रिसर्च टुवर्ड्स एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च, SAAR. तो इसमें हम डिफरेंट कॉलेजेस से, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से बच्चियां ले सकते हैं, उनको हम एक रिन्यूमरेशन दे सकते हैं. वो हमारे प्रोजेक्ट्स में स्टेटस को पर जो स्थितियां अध्ययन करेंगे, रिपोर्ट देंगे, उनको एंगेज कर सकते हैं उस रिपोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन में. तो सार इज वन रेमेडी. अदर थिंग इज दैट ट्यूलिप इंटर्न्स, महुआ ने एक और व्यवस्था की, ट्यूलिप इंटर्न्स. तो अब हम MBA ग्रेजुएट, यदि हमारे IIM रायपुर में IIM है, हम IIM रायपुर से MBA ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या इंटर्न्स बच्चे ले सकते हैं, उनको एक हैंडसम सैलरी पे कर सकते हैं. उनके यंग ब्लड के जो थॉट्स है, वो सिटीजन भी हैं, मतलब रायपुर में उस समय रह रहे हैं, और उनकी क्या परेशानियां हैं, वो क्या देख रहे हैं, क्या चेंज चाहते हैं सिस्टम में, हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं बजाय सिर्फ क्रिटिसाइज करने के. तो ऐसे कई सारे इनिशिएटिव दिए जा रहे हैं स्मार्ट सिटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत, जो बहुत इनोवेटिव मिशन है. बाकी मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अलग है, जिसमें हमें ये लिबर्टी मिल रही है कि हम जनता से जुड़ सके, उनका फीडबैक ले सके. एक और चीज स्मार्ट सिटी में अच्छी हो रही है, वो ये है PR. तो PR के थ्रू कई सारे इवेंट्स करा रहे हैं, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स हो रहा है. हम सिटीजन से पूछ रहे हैं कि आपको अपने शहर के बारे में कैसा लगता है. मल्टीपल सर्वे हो रहे हैं, क्वेश्चनायर हो रहा है, और उस रैंकिंग स्कोर के बेसिस पे हम इंप्रूव कर रहे हैं. नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग. द क्वेश्चन इज अबाउट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. कोई भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तभी सफल होगा जब हम जो इसके यूजर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, उनको प्रॉपर ट्रेन करेंगे, डिजिटल इकोसिस्टम देंगे, और इनिशियल रेजिस्टेंस पीरियड को हम सक्सेसफुली क्रॉस करेंगे. अन्यथा वही होगा, फिर से हम मैनुअल लौट आएंगे और बोलेंगे नहीं, ये नहीं चल रहा, ये प्रॉब्लम है. इसके अलावा हमने रायपुर में एक बनाया मोर रायपुर ऐप. इसमें 23 सर्विसेज, अभी आपको वीडियो भी दिखाया जाएगा, 23 सर्विसेज हम इंटीग्रेट कर दिए हैं म्यूनिसिपल की, जिसमें आपको घर बैठे कॉर्पोरेशन का टैक्स पे करिए,
जलकर पे करिए, मीटर कनेक्शन के लिए आवेदन लगाइए, म्यूटेशन के लिए आवेदन लगाइए, प्रॉपर्टी टैक्स का कुछ चेंज कराना है। क्यूआर कोड बेस्ड हमने डिजिटल डोर नंबर लगाया है। इस प्रोजेक्ट को सिंगापुर और हांगकांग में एसेट ग्रुप के द्वारा ट्रिपल अवार्ड दिया गया है। इसमें क्या है कि आपके घर के सामने एक डिजिटल डोर नंबर लगा है, आधार कार्ड की तरह 12 नंबर का, उसमें क्यूआर कोड स्कैन करिए, आपका हाउस नंबर डिटेल सारे आ जाएंगे, आपका प्रॉपर्टी टैक्स आईडी आ जाएगा। उसी यूआई से आप सब कुछ पे कर सकते हैं, म्यूनिसिपल सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। उस यूआई जो आपके पास आया क्यूआर कोड स्कैन करके, उसको आप किसी जोमेटो बॉयज को भेज सकते हैं, वो आपके घर सीधे पहुंच जाएगा, वो गूगल मैप से लिंक हो गया है। तो ना सिर्फ गवर्नमेंट उस डिजिटल डोर नंबर का यूज कर रही है, बल्कि प्राइवेट सर्विसेज, हमने उस ऐप में डीडीएन को ऐड करते हुए नियर बाय सर्विसेज डाल रखा है। उससे हमें रेवेन्यू भी आ रहा है कि आप जैसे नियर बाय होटल्स, नियर बाय शॉपिंग सेंटर आप क्लिक करेंगे तो डीटीएन के नंबर के थ्रू फैच करके बता देगा कि इस एरिया में ये आपकी कमर्शियल आउटलेट है, आपके इंटरेस्ट की। तो ऐसी चीजों में हम सिटीजन को जोड़ पा रहे हैं इनिशिएटिव से। लेकिन ये तभी सफल होगा जब हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे। हमने मोर रायपुर ऐप बना दिया, सबको पता है ऑफिस में, लेकिन हम इसकी आईईसी नहीं करेंगे, इसके प्रॉपर सोशल मीडिया में, एफएम रेडियो वगैरह में या टीवी में हम उसको ऐड नहीं देंगे कि ये चीज है, इसमें ये फीचर्स हैं, आप यूज करिए, तो उसके डाउनलोड्स नहीं बढ़ेंगे। हमें उसको पीआर को, गवर्नमेंट योजनाएं बहुत अच्छी बनाती है लेकिन उसका प्रचार प्रसार करने में वीक हो जाती है। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स का हमें ब्लेंड चाहिए। जैसे अभी मेरे पहले के वक्ताओं ने बताया कि हमें एक्सपर्ट्स को हायर करना है। जैसे मॉर्निंग में दिल्ली डीडीए का सेशन हो रहा था, सो दे हैव टोल्ड कि दे हैव हायर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स फॉर प्लानिंग एनवायरमेंटल थिंग, दे वर एक्सपर्ट इन एनवायरमेंटल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, और ये हमारे नीचे के एम्प्लॉइज डूइंग प्लानिंग बना रहे हैं या कंसल्टेंट से बना रहे हैं, तो जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है वो बनाए, उसको इम्प्लीमेंट करे, मॉनिटर करे। तो जैसा दिल्ली में उन्होंने करके दिखा दिया, पूरा बायोडाइवर्सिटी पार्क क्रिएट कर दिया, पहले कितना बैरन लैंड था, वैसा सब कुछ हो सकता है। तो एक्सपर्ट शुड बी देयर एट एक्सपर्ट प्लेस, जहां जिसकी जरूरत है वो काम करे। Wonderful. I think you summarized it pretty well. But just, just a quick ending remark from all of you, looking at, your probably one key initiative or one key effort that you think will further accelerate and, accentuate the efforts being done by smart city projects. So, one quick takeaway from all of you. Stress on sustainability, that is very important. I mean environmental sustainability, financial sustainability, and everything. So if that is at the center of our initiatives, it will go a long way and smart city mission will be ultimately successful. Perfect. Inderjit ji. Integration of all departments under smart city before taking any projects, I think that will help to manage city better. I think, as I said before, a holistic approach and seeking to make projects, avenues, things self sustainable so that no more intervention is required. For me, it's like integrated and coherent approach, coordination between department, no silo kind of working, and the very important thing that stability of tenure. Like the sir said, Vikramaditya sir, कि if you won't give proper tenure, 2 year, 2.5 year, then things will not work out. 6 मंथ आपको समझने में लगते हैं, जैसा बताया गया। उसके बाद आप कुछ काम चालू करते हैं, फ्रूट्स आने चालू होते हैं, 8वें 9वें महीने में आपका ट्रांसफर हो जाता है, या आप 1 साल के बाद ट्रांसफर हो जाते हैं। अगेन न्यू ऑफिसर कम, ही स्टार्ट विद न्यू थिंकिंग, फ्रेश आइडियाज, अगेन ही स्टार्टेड after 9-10 months, same cycle repeat. So things will not move if you keep on transferring the officer. So some stability like 2 years, 2.5 years for a smart city CEO, smart city MD, so that he can plan, he can execute and get the results on the ground. Perfect. Thank you. Thank you so much, gentlemen. I think the proactive, cohesive, sustainability approach is definitely the way forward. So thank you so much for joining us. And over to Vijay ji.